Today we start with the real-time operating system. So earlier we cover some kind of concept of different type of operating system and its um, uses and multiple user system, single user system, okay, and multitasking operating system. So today we going to discuss about that operating system, about real-time operating system. It is another part. So have a look on that. The time sharing operating system is a one of important type of operating system. It enables the many people located at the various terminal to use a particular computer at the same time. Multitasking, time sharing enable many people located at the various terminals to use the particular computer system at the same time. Multitasking time sharing system is logical extension of multi-programming. Means same time रे आमे multiple work एटी perform करि परिबा and the main difference between time sharing system and multi-programming batch system is that in the case of multi-program batch system the objective is maximize processor use. Means at a time आमे multiple काम एटी करि परिबा गोटे टाइम रे ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ସେୟାରିଂ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା କରିବା ପାଇଁ ତ ସପୋଜ ସିଏ ଯଦି 3-4 ଦିନ ନେଉଛି ଗୋଟେ କାମ ସାରିବାକୁ ଯଦି 4 ଦିନ ସମୟ ନେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ 4ଟା ଲୋକ ଯଦି ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛି ସେ କାମ ପାଇଁ ତ ମେ ବି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ କାମଟା ସରିଯିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ବଟ୍ वी आर शेयरिंग द टाइमिंग टू द मल्टीपल पीपल so that my what you can say the time by using of this time effort uh, we are minimizing the टाइमिंग माने मु अधिक लोक जेतले यूज करूची मोर टाइमिंग टा औरी मिनिमाइज हे जाउची सो इन द स्मॉल स्पैन ऑफ टाइमिंग हमर प्रोसेसिंग भी हमर वर्क प्रोसेस टा भी स्पीडी रहउची so that is the benefit of this operating system. Now we move to the next part. Multi-processing operating system. Multi-processing is use of two or more central processing unit within a single computer system. The term also refer to the ability of a system to support more than one processor or the ability to allocate the tasks between them. There are many variations of this basic theme, and the definition of multi-processing can vary with the context, mostly as function of how the CPU are defined. According to the some online dictionary, a multiprocessor is a computer system having two or more processing unit is sharing the main memory and peripheral in order to simultaneously process the same program. Multiprocessing ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି at a time ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ମଲ୍ଟିପଲ ପ୍ରୋସେସର କାମ କରିବ ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ଡୁଆଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ କୌଣସି ୱାର୍କଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ସ୍ପିଡି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡୁଆଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେମିତି ପ୍ରୋସେସର ବି ସେମିତି ଡୁଆଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଭାବେ କାମ କରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ଡବଲ ମେସିନ୍ ଲଗାଉଛେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ୱାଟ୍ ଆମର ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂଟା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହେବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ बेसिक नीड ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग आमे जेतेबेले कोनोसी डिफिकल्ट वर्क करूचे आउ सपोज आमे धर गोटे डाटा सर्च करिवा 50टा भितरु हमको गोटे डाटा सर्च करिवार अछि ताले आमे इजीली गोटे प्रोसेसर यूज कर परिबा जोटी आमे हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा मेंटेन करूचे सपोज आमे नै दिबा जियो यूजर सो 10 बिलियंस ऑफ पीपल्स आर यूजिंग इन द जियो एंड ता भितर मु जदि गोटे डाटा गोटे कस्टमर इन्फॉर्मेशन मते सर्च करिवार अछि so that means it is taking a what lot of timing okay so that जदि मु से समय मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम बा मल्टीपल प्रोसेसर जदि मु यूज करूची से जो सर्चिंग पावरटा डिफरेंट रहइबो सपोज मते लक्ष्य डाटा भीतर गोटे डाटा सर्च करिवार जदि मु गोटे लोक को असाइन करिवि से डाटा को सर्च करिया पई तो जति समय लागिवा मु धर 15टा कि 20टा लोक को देबी डिवाइड कर देबी आ पार्ट पार्ट कर देबी तू 10,000 भीतर देख ए लोक 10,000 भीतर देखियो तो दैट मीन्स इजीली मु ताको सॉर्ट आउट कर परिबी जेंते कि घरे कम हुई ना जता चाउल तमे बाछ गुड़ी फड़ी मिसी जाए गोटे लोक गोटे बस्ता चाउल माने बाछिबा पई जते कि समय नब हम जदि मल्टीपल लोक से जगह रे रही कि से एक्शन टा परफॉर्म करिवे
ताले जानिबो जे खूब शीघ्र से जिनसटा हमर चारोटा शीघ्र बछा हे जीवो. That is a benefit of your multi-processing operating system. Now we move to the next the we now we move to the next operating system. Let's check. Multitasking operating system. In a multitasking operating system, it is used when multiple jobs are executed by the CPU simultaneously. Okay, the multiple jobs at a time ame word kholi pariba, at a time ame music suni pariba. Okay, simultaneously by switching between the multiple application. And OS does the following activity related to multitasking. The user give the instruction to the operating system or to give directly and receive immediate response. Okay, directly ame request daba, ame response ta automatically generate kariba. The OS handle the multitasking in the way that it can handle multiple operation, execute multiple program at a time. At a time ame multiple work eti kari pariba. Multitasking operating system are also known as time sharing system. The operating system were developed to provide interactive use of computer system at a responsible cost. A time share operating system uses the concept of CPU scheduling and multi-programming to provide each user with a small portion of time shared CPU. Each user has at least one separated program in the memory. Multitasking रे कौन हबो जेमति कि हमें ओपन करिबा कोनोसी वर्ड ओपन करूचे जदि मु देखौ जे देख मल्टीटास्किंग केमति होची गोटे एप्लीकेशन रे मुठी गोटे वर्ड ओपन कली वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करूची. Okay, so if I write something here, एटा को मार्क करिवो एटी 0 वर्ड अछि मु किछि जिंस जता एटी लिखुची दिस देखो एटी गोटे वर्ड आला साइमल्टेनियसली एटा वर्क होची इज आ गोटे आसला तापरे कंप्यूटर सो ऑटोमेटिक तीनटा वर्ड एटी ऑटोमेटिक काउंट हला मु लाइन लिखुची ऑटोमेटिक देखते वर्ड काउंट होची. So simultaneously at the time of writing it is work hochi, at the time of typing word I am recording my videos, that is also multitasking program. So computer does the multiple work at the same time, means I communicate with the other people through this multitasking operating system. Okay, so here the CPU has giving a timing when to execute. तो ये हमारा जो पार्ट टा रहिला हमें देखिवा the CPU is simultaneously by switching between them. Switches occur to the frequently that the user may interact with the each program while it running. As an OS does the following activity related to the multitasking. The user give the instruction to the operating system or a program directly and receive the immediate response. The OS handle multitasking in the way that it can handle multiple operation and execute multiple program at a time. At a time, हमें multiple program एटी करी परिवा. These operation system were developed to provide interactive use of computer system at reasonable cost. So the reasonable cost रे हमें multiple work करी परिवा. आउ हमारा multitasking हेले कौन हो बना हमारा time टा भी हमारा मची हो अदर. Network operating system is an important type of operating system. Network operating system run on the server and give the server capability to manage the data, user, groups, security, application and other networking function. जेमती देखिवा आमे तरा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करूचे सपोज गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे गोटे प्रिंटर हेले चलिबो तेनु मु कोन करिवि जेता बे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करूची
जो ऑपरेटिंग सिस्टम रे माने जोठी मोर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रही सेठी मु कनेक्टेड कर देले प्रिंटर आउ सब जगह क्लाइंट माने हमर नेटवर्क थ्रू रे हमर सर्वर सहित कनेक्टेड हेले ताले कौन हम मु जेकोसी क्लाइंट मशीन ने बसे कि मु प्रिंट आउट देवी सर्वर पाखे जो मशीन अच्छे से आसो आउ जहाँ भी डाटा स्टोर करी सेटा मोर सर्वर रे जाके स्टोर हम तेणु से मते अलगा मेमोरी रो कोनोसी आवश्यकता पड़िबो नाही एटा होची मोर काम होची नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रे आदरे बहुत प्रकार आमे कोन कर परिबा रिसोर्स शेयरिंग करि परिबा प्रिंटर शेयरिंग करि परिबा डॉक्यूमेंट शेयरिंग करि परिबा गोटे सॉफ्टवेयर मु सर्वर रे इंस्टॉल करिछि आ क्लाइंट रे से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिवा दरकार नै जो क्लाइंट रे दरकार पड़िबो सने सर्वर को एक्सेस करिकि से एप्लीकेशन को यूज करि परिबे so that you can say it is called as your what network operating system which is having a benefit that you can sharing the resource sharing the information okay next point it describe that advantages it is centralized server and highly stable security is server managed upgradation of new technology and hardware can be easily integrated in the system it is possible to remote access to the server माने आमे रिमोटली कौन करि परिबा जदि नेटवर्क रे रहउची मु आ गोटे क्लाइंट को रिमोटली ने की काम करि परिबी आ गोटे क्लाइंट को मु मो जगह को आने की सेठी मु वर्क परफॉर्म करि परिबी advantages such as centralized server are highly stable security is server managed upgradation of the new technology and hardware can be easily integrated into the system it is possible to remote access of the server from the different location and type of the system disadvantages are कौन रोची ना high cost of buying and running a server okay the high cost of buying and running a server dependency on the central location for most operation regular maintenance and updates are required okay high cost of buying running the server माने सर्वर टाको किनिबाटा को माने हमें चारि पांचटा क्लाइंट किनि परिबा जेति कॉस्ट रहउची सर्वर मशीन रो कॉस्ट अधिक रहइबो डिपेंडेंसी ऑन द सेंट्रल लोकेशन क्लाइंट माने सर्वर सहित डिपेंडेंसी हेबे जदि सर्वर रे कोनोसी नेटवर्क इशू रहउची सर्वर रे जदि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ठीक से न होउची क्लाइंट ता हमर रन करि परिबो नाही रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर रिक्वायर्ड एटी अपडेट ता हमको बहुत दरकार पड़िबो हमें क्लाइंट टा को अपडेट करिया पड़िबो सर्वर टा को अपडेट करिया पड़िबो देन सर्वर कम करिबो ना मल्टीपल क्लाइंट को एका संगरे मैनेज करि परिबो तो नेक्स्ट हमें मूव करिवा नेक्स्ट कांसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर को जीवा then we have another part that is called as the DIX operating system the earlier age रे बा जेते बेले कंप्यूटर आगो आसीथिला आमे ए जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस देखो जे जोठी कि हमर यदि मु डेस्कटॉप ता तुमको शो करिवि तो एटा हला हमर ग्राफिक यूजर इंटरफेस एटा हमर ग्राफिक ए टोटल स्क्रीन ता जोटा देखो छ ग्राफिक यूजर इंटरफेस तो ए इंटरफेस आगुरु नथिला सो प्रीवियसली वी हैव the black and white screen suppose it is working through the command prompt like this one तो हम स्क्रीन टा एमती ब्लैक एंड व्हाइट रे थिला हमें त मूवी भी देखुथिबो जते कोनोसी सैटेलाइट हो या हैकिंग मूवी देखुथिबो तो ए टाइप रो स्क्रीन ने से माने काम करंती ए इंटरफेस हमर नथाय तो आगुरु जो एप्लीकेशन हमें सब यूज करूथिले एटा ए कमांड थ्रू रे हमर काम करा होतला हमें कमांड पास करले हमें नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करूथिले सो दैट इज working through the commands so that is the work of your DIX operating system the DIX operating system you can say here मैं देखिबा DOS or DIX operating system
is a computer program and no personal computer can do without it. It exists in the two form. The one supplied for IBM personal computer is known as PC-DOS, and all other compatible personal computer use MS-DOS. हमें जो DOS टा मुझे open कली command prompt that is a MS-DOS. The commands are used in the most version of DOS are identical, and their purpose is to enable the otherwise unless the electronic that go to the makeup of a personal computer to operate as a computer. कंप्यूटर कौन सी ऑपरेशन करने को हेले आमे एक कमांड थ्रू रे ही आगुरु परफॉर्म करते और पर्सनल कंप्यूटर रिक्वायर एटलीस्ट वन डिस्क ड्राइव and on which are stored in the file. The file can be either a set of computer instruction, a program, or file of the data in either numerical, alphabetical form. The purpose of the disk operating system is enable the computer to transfer the data stored on the magnetic disk to another part of the computer. आमे कोड स्टोर करतले ना आमे RAM रे स्टोर करतले random access memory रे information स्टोर करतले and the video screen and printer. The computer proper is contain the microchip called as the microprocessor, and its main purpose is to act the telephone switchboard controlling the flow of the information through the computer according to the instruction. तो ये आमर कौन रोचे देख ये पॉइंट आमर कहला जे डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आर दीटा पार्ट रहिबा गोटे आईबीएम कंप्यूटर जो आगरो यूज करथले बा सर्वर को एक्सेस करिया पे आईबीएम गोटे कमांड यूज कराउतला आउ आमे जो एबे नुआ जो सिस्टम आमे यूज करूचे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जंते कि हमर जते बेला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आस्तला विंडो 95 आस्तला विंडो 92 आस्तला सेठी ग्राफिकल रो कोनोसी कांसेप्ट नथिला कंप्यूटर सहित काम करने आमको बहुत प्रकार कमांड टा मन रखा पड़ूला एंड ऑल पर्सनल कंप्यूटर एटलिस्ट वन डिस्क ड्राइव टू स्विच स्टोर द फाइल आ से समय फाइल गुड़ाक स्टोर करने डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम रे जहाँ गोटे तुम हार्ड ड्राइव रोला एवं आम कौन करूँ ना सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव एमती डिफरेंट ड्राइव पार्टीशन करें किंतु आग समय आम गोटे फाइल आमको एटलिस्ट रखा पड़ूला गोटे डायरेक्टरी रखा गोटे आम ड्राइव रखा पड़ता जहाँ कि आम फाइल स्टोर कर ए फाइल कैन बी आइदर द सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन और ए प्रोग्राम से फाइल टा आइदर आम किसी फाइल ने आम निजे स्टोर करते कि कंप्यूटर किसी इंस्ट्रक्शन से स्टोर होता and files of the data is either numerical or alphabetical form. Numerical form में रहूतला और alphabetical form में रहूतला. The purpose of disk operating system is to enable the computer to transfer the data stored on a magnetic disk to another part of computer. Its main memory known as RAM. जैसे कि आगुरु भी कंप्यूटर जो थिला सेठी हमारा RAM यूज होतला एठी भी हमें RAM यूज करूचे. The computer proper its contain and microchip called as the microprocessor, and its main purpose to act like a telephone switchboard. It controlling the flow of information through the computer in accordance with the instruction that are currently held in the RAM. In addition, it has ability to perform the various simple arithmetic. Okay, so DOS रे हमरा various simple arithmetic काम करा होतला. Feature of DOS रे कौन feature अछि? It is a single user operating system. At a time केवल गोटे लोक काम करि परिबो. इट प्रोवाइड ए हायरार्चिकल फाइल सिस्टम माने आमे कोन कहबा हायरार्चिकल माने इट इज शोइंग यू एज अ टेबुलर स्ट्रक्चर मु जदी देखौ छी एठी गोटे कांसेप्ट इंटरनेट रो तुमको देखे दउची सो आई विल गो टू द डेस्कटॉप. This is called as the hierarchical view. जेमते हमें फोल्डर फाइल्स जा भी ओपन करिवा देखिबो. This one is a hierarchical view. हमें फाइल फोल्डर कांसेप्ट रे जदी जिबा let it open in a new tab. This one এটা हमारा hierarchical view रे जीवो.
Okay, folders of store है, it is stored in a hierarchical view. Okay, so it is provide the hierarchical file system. हमें एबे भी जो file system use करूचे, that is a hierarchical file system. It support many application packages. जेमती कि हमें packages कही परिवा modules program रो एटा different modules ये सब रखुची, and it is a command based operating system. हमें जहाँ भी work perform करिवा operating system रे by using of command. Commands are divided into two categories. One is internal, another is external. The code for internal command is included in the form of command.com file where each external command has got individual file contain the command. तो किसी internal command अच्छी जोड़ा कि command.com file रे store हुए, आउ किसी external command अच्छी. DOS require relative low amount of memory for installation. आगुरु GUI नथिला, command through रे काम करतला. तेनु DOS रे जो operating system हमें use करूचे, DOS operating system installation करिया पे खूब कम मेमोरी रिक्वायर्ड करूला बा अल्प मेमोरी हमर नौथला डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ वी मूव टू द पार्ट the loading of DOS from the secondary memory to the primary memory is known as DOS booting, for which the user get the command prompt, and all the internal command are processed by the command interpreter which is having three portion. adra tinta portion rahutla, gote hochi amara resident portion rahutla, ଆଉ ଆମର ରହୁଥିଲା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହୁଥିଲା ଟ୍ରାନଜିସନ portion, ओके, एंड ऑफ पोर्शन. तो तीनटा पोर्शन हमर एठी यूज करूचे. Then we move to, these are the different internal command we are using. One is cd command. Suppose मते कोनोसी ड्राइव को जिबार अछि तो मु एठी ओपन करिवि, विंडो बटन प्रेस करिवि, एठी cmd लिखिवि. सपोज मते एबे कोनोसी ड्राइव को जिबार अछि, एबे मु डी ड्राइव रे अछि तो मते ई ड्राइव को जिबार अछि, मु ई कोलन एंटर मारले मु एबे ई ड्राइव को आसी जिवि. मु डी कोलन एंटर मारले एबे डी ड्राइव को आसी जिवि. एबे मते जदि कौनसी डायरेक्टरी बनैबार अछि बा डी ड्राइव रे किछि फोल्डर बनैबार अछि, मु लिखिबि एमडी. सपोज मु आज लिखिबि नवेम्बर एनओवी डाटा, नवेम्बर डाटा. तो देख मोर डायरेक्टरी क्रिएट हो गला. एबे देखिए मु जदि cd एनओवी डाटा को जीवी, एबे मु आसी गली. एबे मु चेक करी फिजिकली मोर एनओवी डाटाटा क्रिएट होइछि कि नहीं. आमे देखि दवा डी ड्राइव को जाएंगे. तो ये जो कमांड टा मु यूज कली डी ड्राइव, एबे देखो डी ड्राइव हमर ओपन हला, मु फोल्डर टा बनैली एनओवी डाटा. तो देखो एनओवी डाटा देखो, तो आज का टाइम रे क्रिएट हला. देखो हमारा टाइमिंग पर्सन एटा देखो 23/11/2020 एटा डिफाइन कराई जे हमारे एटी एनओवी डाटा देखो को टाइम रे हमारा क्रिएट हला. तो एट द सेम टाइम वी आर क्रिएटिंग ए फोल्डर. जो टाइम रे हम क्रिएट करबा से टाइम रे हमरा सी गला. एटा होचे हमरा फोल्डर बनाउ छै. देखो आगुरु ग्राफिक इंटरफेस रे केते यूज हमें आराम से करि पाउ छै. राइट क्लिक क्रिएट ए फोल्डर. तो आगुरु ए फोल्डर टा भी बनेवा पई हमको लिखिबा को पडुतला, आई कमांड सब पास करिया पड़ता. एबे कमांड टा लिखला परे मु जदी स्क्रीन टा को क्लियर करिया को चाहू छी, मु एटी cls लिखिबि. cls लिखले जहाँ भी एक्स्ट्रा कमांड मु लिखिथिबि पूर्वरु सेटा मोर क्लियर हे जिवो. तो ये पार्ट रे हमें पढ़ले कोना cd फॉर मूविंग टू द एनी डायरेक्टरी. मु एटी cd डॉट डॉट लिखिबि ताले मु डायरेक्टरी बाहर को पळे आसीबि cd डॉट डॉट. और डायरेक्टरी भीतर को गले मु cd लिखिबि. cls यूज कले मोर स्क्रीन टा एठी क्लियर हे जिवो. दैट इज द डिफरेंट कमांड्स वी आर यूजिंग. एंड dir जदि मु लिखिबि मोर जहाँ भी डायरेक्टरी एठी बनै जी डी ड्राइव रे जहाँ भी फोल्डर सब अछि सबु देखे देला. सबु फोल्डर केबे क्रिएट हे जी, कोन स्ट्रक्चर, कोन
फाइल केबे क्रिएट है पूरा ड्राइव रे जहाँ भी फाइल फोल्डर आम बनईचे ये सबू मते ये देखेदब तो दैट इज द वर्क ऑफ योर dir कमांड अप टू पूरा लास्ट जाए जहाँ जहाँ अच्छी अप टू पूरा मते ये सब देखेदेला ओके तो ये काउंट भी करदेला मोर केते फाइल अच्छी 637 फाइल अच्छी केते बाइट्स केते मेमोरी नहीं देखेदेला डायरेक्टरी केतरा अच्छी केतरा फोल्डर अच्छी भी देखेदेला आउ केते मेमोरी मोर फ्री अच्छी भी देखेदेला ये सब आमर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखेला तो देख एबे आमे गोटे फोल्डर बनईचे एठी आमे देखि परिबा एनओवी डाटाटा अच्छी एठी मु एबे ताकू क्लियर स्क्रीन कर दउची एबे मु कोन करिवि ना फाइल टाको रिमूव करिवि रिमूव करिया पे हेले आरडी एनओवी डाटा तो देखिवा मोर एनओवी डाटाटा एठी अच्छी कि पड़ला देख आउ नाही एनओवी डाटाटा थिला आउ नाही एटा डिलीट हो गला ऑटोमेटिक तो आरडी आम यूज कले रिमूव डायरेक्टरी यहाँ मोर यूज करा जीवो ओके तो नेक्स्ट रे क्लास में पढ़ा हाउ टू रिनेम द फाइल एंड हाउ टू गेट द टाइप ऑफ द टेक्स्ट थैंक यू गुड बाय